Hello friends, I hope you guys are doing very well and you are safe at your home. तो जैसे कि न्यूमेरिकल मेथड्स में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। अगर थोड़ा सा हम शुरू से चले तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फाइंड किए नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए, देन सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए बाय यूजिंग सम मेथड्स। फॉर एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड, regular Farsi method, iteration method, Newton-Raphson method. Then we studied the methods for the solution of system of nonlinear equations, iteration method and Newton-Raphson method. Further, we have studied solutions of the system of linear equations with the help of direct methods and indirect methods. And in direct method, we have studied Gauss eliminations, Gauss-Jordan method, matrix decompositions, matrix inversion method, and LU decomposition method. And in the indirect method, we have studied Gauss-Jacobi method and Gauss-Seidel method. And then in the continuation, we have studied the interpolation, and we have very deep lecture in our playlist about the interpolations and interpolating methods. We have studied many interpolating methods. It's like Newton forward interpolation method, Newton backward interpolation method, and central formulas, just like Stirling central difference formula and Bessel central difference formula. And we have also studied ये जो फॉर्मूलाज हैं, इंटरपोलेटिंग फॉर्मूलाज हैं, ये सब इक्वली स्पेस्ड डेटा के लिए होता है। एक डेटा आपको गिवन है, इक्वली स्पेस्ड डेटा है, उसके लिए आप ये सब फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया है साथ साथ में कि ये जो इक्वली स्पेस्ड डेटा अगर आपको दिया हुआ है तो किस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने स्टडी किया है इंटरपोलेटिंग मेथड फॉर द अनइक्वल स्पेसिंग, जो कि अनइक्वल स्पेस्ड डेटा है आपका, उसके लिए हमने यूज किया है। अगर आपका डेटा अनइक्वल स्पेस्ड है तो उसके लिए आप किस तरीके से कौन कौन से फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हमने दो फॉर्मूला देखे, एक तो देखा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और दूसरा देखा हमने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और न्यूटन जनरल डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो इसके बाद हमने क्या किया कि इंटरपोलेशन में आगे बढ़े हम, और हमने फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फाइंड किए, डिफरेंशिएशन के एट द पॉइंट, numerical value at the tabular point or non-tabular point for the first derivative and second derivative. उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हमने numerical integrations find किए with the help of trapezoidal formula, Simpson 1/3, Simpson 3/8. So in the continuation, today we will study the solution of ordinary differential equations. Solution of ordinary differential equations. Today we will study the solutions of ordinary differential equations. Ordinary differential equations के solutions कैसे निकालें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, dy/dx इक्वल्स टू f(x, y), जनरल फॉर्मेट में दे दिया है ना। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, y होगा, वो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया विद द इनिशियल कंडीशन, with the initial condition
y एट द पॉइंट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट। ठीक है, ये ख्याल रखना अगर आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो इनिशियल कंडीशन आपके पास एक होगी, अगर ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन 2 होगी, और अगर आपके पास 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या होगी, आपके पास 3 इनिशियल कंडीशंस होंगी। तो सॉल्यूशंस फाइंड करना है हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो उसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। जैसे कि हम पहला मेथड जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट मेथड, ये है हमारे पास टेलर्स मेथड। टेलर्स मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही छोटा सा काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप लोगों को याद होगा, है ना। टेलर सीरीज एक्सपेंशन, अगर आप किसी पॉइंट x नोट के अराउंड और कोई फंक्शन है आपका, उसको एक्सपेंड करते हैं, है ना, y द फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करें एट द अराउंड द पॉइंट x नॉट, तो आपको क्या मिलता है, y इक्वल्स टू y एट द पॉइंट x नॉट प्लस x माइनस x नॉट y dx एट द पॉइंट x नॉट प्लस x माइनस x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल y डबल dx x नॉट एंड देन प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी सी बात है, अगली टर्म अगर आपको लिखनी हो तो क्या लिखेंगे आप, x माइनस x नॉट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड y ट्रिपल डेक्स x नॉट। डेक्स का मतलब है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, एंड इट विल गो अप टू nth टर्म। nth टर्म लिख सकते हैं आप इसकी x माइनस x नॉट टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल y nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट x नॉट एंड प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये जो एक्सपेंशन है टेलर्स का, ये इंफिनिटी तक जाता है। और इक्विवेलेंटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू y एट द पॉइंट x नॉट कैन बी रिटन एज y नॉट, देन प्लस x माइनस x नॉट y dx नॉट, देन प्लस x माइनस x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल y double dx now plus 12 up to infinity. So very simple. Y is the function of x. Y is the function of x. तो आप ये जो एक्सपेंशन है, ये जो इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, y is the function of x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गौर करूँ, ये मेरा क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। थोड़ा सा अब आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइंड करना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता था आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो जो सॉल्यूशन आता था ना आपका, वो y की टर्म्स y आता था, y है ना, यानी कि y की ऐसी वैल्यू जिसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने के बाद आपका ये फंक्शन मिल जाए, बराबर इक्वल हो जाए, है ना। तो वो अप्रोक्सीमेट आपको ये देगा टेलर्स एक्सपेंशन, ये y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ से भी अगर आप इसको सोल्व करते थे तो y क्या आता था, इसका सॉल्यूशन y द फंक्शन ऑफ x आता था, है ना। तो बाय द टेलर एक्सपेंशन ये आप कर सकते हैं, तो वेरी इजी, है ना। इसको इम्प्लीमेंट करना ही बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन लें और डायग्राम दो क्वेश्चन, find the solution of the differential equation, ordinary differential equation dy over dx equals to x minus y square with the initial condition y at the point 0 equals to 1 using Taylor's theorem, using Taylor's formula। Taylor's formula का यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। तो ये आपको क्या दे दिया, f of x y, व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, ये आपका हो गया f of x y, ये आपका क्या हो गया x नॉट हो गया और ये आपका क्या हो गया y नॉट हो गया, ठीक।
तो सिंपली आप क्या लिखते हैं, टेलर्स मेथड क्या होता है आपके पास, टेलर्स मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है आपके पास y ऑफ x इक्वल्स टू y नोट प्लस x माइनस x नोट और y डेक्स नोट प्लस x माइनस x नोट स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डेक्स नोट and plus dot 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 plus x minus x naught to the power n divided by n factorial y n naught and plus dot dot dot. It is your Taylor's method to find out the solution of the ordinary differential equation. Now just compute the values, nothing else. Y of x equals to y naught. What about y naught? Our y naught is 1 and plus x minus, what about x naught? It is 0, that is x minus x naught is nothing but the x, y naught x. So y naught x, okay, y naught x is our questions. So it is what, y x is what, y x equals to x minus y square. So y dex naught equals to what, x naught minus y naught square, or you can write it x naught minus y at the point x naught square, both are equivalent. So what about x naught? X naught is 0 minus y at the point x naught, that is 1, 1 square is 1, that is equals to minus 1. So if you talk about y naught dex, what about y naught dex is 1, not 1, it is minus 1. So replace here minus 1. Then plus x minus x naught to 0 हो गया आपका, it's 0 square by 2 factorial and y double dex naught. So it's the first derivative. Find out the second derivative with the help of this. So what about the second derivative? Second derivative, again differentiate it with respect to x, that is 1 minus 2y dex. Okay, now find y naught double dex means 1 minus 2 y naught dex. So it is what, 1 minus 2. What about y naught? Y naught is 0, y naught is 0, so it will be 0, okay, it will be 1. So here y naught double dex is 1. So plus in the continuation plus x to the power 3 by 3 factorial y3 naught. Okay, so what about y3 naught? It is your y double dex naught, y double dex. So what about the y3? Y3 is what, 0 minus 2 y dex and y dex, then minus 2 y double x. So what about y3 y third derivative at the point naught, x naught is equals to what, 2. What about y1 y first derivative, okay, y1 naught. What about y1 naught is minus 1. So minus 1 into minus 1 is plus 1, okay, then minus 2. What about y naught? Y naught is 0, it's simply 0, and y double dex 0. So what about the value of y naught triple derivative? So it will be y naught triple derivative equals to minus 2, okay, minus 2. So it will be minus 2, fine. So go further, plus x to the power 4 by 4 factorial. And what about the fourth derivative? Because here we need y naught fourth derivative. So we have calculated third derivative. Now let's go further, y4. So differentiate it
with respect to it x once again. Okay, and it will be, if I say it is what, minus 2 y dx square, so it will be minus 2 y dx square, that is 2 y dx y double x. Fine, and it will be minus 2 y dx y double dash and minus 2 y triple dash. Fine, so minus 2 and y dx square derivative is what, 2y dx, then again y dx is y double dash, then minus 2 y dx y double dash and minus 2y triple dash. So what about the value y for derivative at the point 0? It's nothing but minus 2 minus 4 y dx y first derivative is what, minus 1. It is minus 1. Y not double derivative is what? It's plus 1. It's plus 1, and then minus 2 y not first derivative is what, minus 1, and okay, it will be 6. Fine, and it will be 1. Then go further, minus 2. What about y naught? Y naught is 1. Y naught is 1, and y naught third derivative is what? Y naught third derivative is minus 2. Multiply with minus 2. So calculate it. It's what? Plus 4 and plus 2, that is 6, and plus 4, that is 10. So y naught for derivative is nothing but the 10. So it will go up to desired accuracy. For example, I want to find the solution for x equals to 0.1 correct to 4 decimal places. I want to explain my questions once again. Find the solution, numerical solution of this ordinary differential equation associated with the initial condition at the point x equals to 0.1 correct to 3 decimal places or correct to 4 decimal places. So if we talk about the correct to 4 decimal places, so here we need the term x to the power 4 by 4 factorial. Here we will expand the Taylor expansion at the 4th power, and if you want to find out the solution up to correct to 5 digits, so we will take the expansion up to 5th power of the x. So it's very simple. Now we will work here correct to 3 decimal places. So correct to 3 decimal places is what? Yx equals to, what about this? 1 minus at the point 0.1, so it is 0.1, 1 minus x 0.1, then plus 0.1 square by 2 factorial, and then minus 2 0.1 cube by 3 factorial, and plus 0.1 to the power 4 by 4 factorial, and 4 factorial multiplied by 10. So here we will stop, because here we need to find the solution at the point x equals to 0.1 correct to 3 decimal places. So students, here we need to remember what is the restrictions given on the solutions in the questions. So here we need to calculate just this value with the help of calculator. So on your calculator, I just type the values 1 minus 0.1, then plus 0.1 square, and divided by 2, then minus 2, and multiply by 0.1,
power 3 and divided by 3 factorial, or you can write here 6 divided by 6 and plus 0.1 to the power 4 bracket close and divided by multiply by 10. Okay, we can write it like 4 multiply by 10 and then divided by 4 factorial. I think there is option of factorial, so yeah. So 4 factorial. Okay, 4 factorial. Fine. Now so the solution comes 0.9047. So it is the approximate solution of the given differential equation, correct to 4 decimal places at the point x equals to 0.1. So here we will work in this direction. So students, I hope you understood very well. Find out the solution y at the point 0.1 of the differential equation y double dx minus x y dx minus y equals to 0 with the initial condition. What about the initial condition? Y at the point 0 equals to 1 and y dx at the point 0 equals to 0. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो 2 इनिशियल कंडीशन भी होगी, है ना, और अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो एक होगी, थ्री ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपके पास क्या होगा, 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 कंडीशन दी हुई होंगी आपको। ठीक, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि टेलर सीरीज क्या होती है हमारे पास, टेलर सीरीज होती है y एट द पॉइंट x का मतलब 0.1 डायरेक्ट लेके चलने इस बार, है ना। आपको फॉर्मूला तो याद ही अभी हमने लिखा है, तो इस बार डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा। y नोट कितना है हमारे पास, y नोट है हमारे पास क्या, y नोट की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है। 1 प्लस x माइनस x का मतलब 0.1, x नोट कितना है 0, तो ये आप ऐसे रखें, और y नोट फर्स्ट डेरिवेटिव, y नोट फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपके पास, y नोट फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है 0, ठीक। देन प्लस x माइनस x नोट स्क्वायर दैट इज 0.1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड y नॉट डबल डेरिवेटिव। अभी हमने नहीं कैलकुलेट किया तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे इसको, y10 तो आपको दिया हुआ है, वो तो आपने यूज कर लिया। y0 डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो y0 डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया आपके पास, x नॉट y नॉट डेरिवेटिव एंड देन प्लस y नॉट। इन दोनों टर्म को इधर लिया बराबर से, ताकि वो छोटा सा काम करा, उसके अंदर x नोट पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x नोट क्या दिया हुआ है आपको, x नोट आपके पास ये रहा, ठीक है भाई, ये आपके पास क्या है y नोट, ठीक। और ये क्या था आपके पास, ये जो गिवन है आपके पास ये है y डेक्स नॉट, ठीक। तो आपने x नोट की वैल्यू यहाँ पर रख देनी होगी 0, ठीक। तो 0 और y नोट ये तो 0 हो गया आपके पास, x नोट क्या है 0 पुट करेंगे तो y नोट के डेक्स आप रखेंगे वो भी 0। तो चलो मैं कर देता हूँ स्टेप 0 इंटू 0 देन प्लस y नोट कितना आपके पास 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इक्वल्स टू 1। अब आप करेंगे क्या, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो थर्ड डेरिवेटिव पे जब आप चलेंगे, ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे आप। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो y नॉट डेक्स देन प्लस x को ऐसे छोड़ देंगे और y का कर लेंगे, ठीक है, देन प्लस y नोट डेक्स, ये मिला आपको। और y नोट डेक्स भी आपका 0 है और x नोट की वजह से ये भी 0 है,
और y नॉट x आपका 0 है, तो थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या होगा 0। तो थर्ड वाली टर्म लिखने से कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि उससे कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो आप फोर्थ करते हैं, फोर्थ निकालेंगे। भाई ध्यान रखना, फिलहाल मैंने नोट इसी लगा रखा है कि नोट करने के बाद तो फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 हो जाएगा, है ना। हम डेरिवेटिव करने के बाद में ये रख रहे हैं, ये करना, ठीक। ये नोट जो है ना डेरिवेटिव करने के बाद लगा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 2y नोट, 2y डेक्स है, तो ये जाएगा आपका 2y डबल डेक्स, नोट लगा दें, ठीक है। देन प्लस x को इसे रहने दें, और ये हो जाएगा आपका y ट्रिपल डेरिवेटिव नोट, देन प्लस, और x का कर लेते हैं इस बार, x का कर ले तो y नोट डबल डेरिवेटिव, तो ये हो गया आपका 3y नोट डबल डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा 0 ड्यू टू x नोट, ठीक है। और 3y नोट डबल डेरिवेटिव कितना निकाला आपने, वो निकाला आपने 1, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इसमें लिख सकते हैं आप थर्ड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव वाला तो 0 हो गया, फोर्थ के लिए लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 0.1 टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और y नॉट फोर्थ, y नॉट फोर्थ कितना आपके पास, वो हो गया आपके पास 3, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, y नॉट डबल डेरिवेटिव कितना आया था आपके पास, y नॉट डबल डेरिवेटिव आया था आपके पास 1, ये आपने यहाँ पे कर दिया 1, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालते हैं, y नॉट फिफ्थ निकालेंगे हम, तो y नॉट फिफ्थ, तो ये कितना है 3 y नॉट ट्रिपल डेरिवेटिव, y नॉट ट्रिपल डेरिवेटिव, देन प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास x नॉट का करेंगे 1 और y नॉट ट्रिपल डेरिवेटिव, एंड देन प्लस x नॉट y फोर्थ डेरिवेटिव। और अगर हम देखें ये वाला तो x नॉट की वजह से 0 रहेगा, और थर्ड डेरिवेटिव भी आपका y नॉट पे क्या हो गया था 0 हो गया था, क्या हो गया था भाई 0 हो गया था, तो ये पूरा फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है, जो ऑड पावर चल रही है ना x की, वो सारी 0 हो रही है, जैसे कि x की पावर 1, y डेक्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ, फिर थर्ड डेरिवेटिव 0 हो गया, अब फिफ्थ हो गया, तो 6 वाला नॉन 0 होगा, ठीक है। तो y6 निकालेंगे, y6, ठीक है। y6 क्या हो जाएगा आपके पास 3, अच्छा ये 4 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 y नॉट फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। एंड देन प्लस x का कर लेते हैं y फोर्थ डेरिवेटिव, एंड देन प्लस x को रखते हैं और y फिफ्थ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये तो x नॉट की वजह से 0 हो जाना है, ठीक। अभी कितना हो गया 5, तो 5 y नॉट फोर्थ डेरिवेटिव कितना आया था आपके पास, y नॉट फोर्थ डेरिवेटिव आ गया था आपके पास 3, तो ये हो गया आपके पास 3, यानी कि 15 हो गया। तो y ये हो गया आपके पास 0.1 टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, एंड देन प्लस 50, ठीक। और ऐसी प्लस डॉट चलते रहेगा। मान लें कि आपको y 0.1 निकालना है करेक्ट टू 7 डेसिमल प्लेसेस, तो भैया 7 तक चल दिया, इससे आगे मत चलिए, ठीक है। क्योंकि आगे आपको पता है कि इसी पैटर्न से v7 क्या होने वाला है, v7 डेरिवेटिव एट द पॉइंट x नॉट क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो यहाँ तक आप चलिए, दैट्स इट, इतना ही काफी है। इसके बाद आपका काम कुछ नहीं बचता, सीधा कैलकुलेटर आपने उठाना है और आपने आंसर फाइंड करना है, ठीक है। सीधा कैलकुलेटर का काम रहेगा, क्या रहेगा भाई 1 देन प्लस 0.1 और मल्टीप्लाई बाई 0 है, ये तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए 0.1 स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2, देन क्या प्लस 0.1 टू द पावर 4, 0.1 पावर 4, देन डिवाइडेड बाई कितना डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई कितना 3, डिवाइडेड बाई कितना डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 शिफ्ट के साथ में रिप्लेस कर देंगे 4 फैक्टोरियल, एंड देन प्लस 0.1 टू द पावर 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 15 एंड देन डिवाइडेड बाई
6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल एंड प्रेस इक्वल. तो व्हाट अबाउट द वैल्यू? वैल्यू इज 1.00502125. करेक्ट टू 7 डेसिमल प्लेसेस की बात होती है, तो ये आपके जो 7 डेसिमल प्लेस है ना, ये करेक्ट हो चुके हैं. तो जितनी भी अच्छी एक्यूरेसी आपको चाहिए उतना ही आप इस एक्सपेंशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे. आई होप कि आप इस मेथड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. तो स्टूडेंट, आपको जैसा भी लेक्चर लगा उसमें आप मुझे कमेंट करिए एंड लाइक द वीडियो and subscribe my channel. Thank you very much. See you in the next class with the next method.